Anand, you want to No, say sir. something? No, okay. So No, the sir. next quarter, yeah. So next quarter, IT earnings will be little bit subdued, and their commentary will be also subdued. And the reasons are well known to everybody, right? Pharma is already facing some music. You guys are aware of it. Reliance may see some slowdown in their export revenue. In mid cap basket, lot of textile companies are there. Their earnings are compromised, right? So you have to see in totality, because of global slowdown, your Nifty earning acceleration will slow down. I'm not saying Nifty earnings will slow down. The acceleration, the momentum you got in last 2 years in Nifty earnings, that will be missing going forward for at least 2 quarters. And that's why my expectation from Nifty is not big. So this concept is loud and clear to everybody. Now, second thing I want to highlight here is, whatever the US has till now raised the interest rate, some of the businesses in USA will be unviable going forward, because they don't have the um, uh, capability, I would say, or they don't have experience to deal with 5 to 6% kind of a borrowing rate, right? They normally borrow at 3, 2, 2.5, 2.8, and they do business. Now they have to, if they want to survive, they have to borrow at 5.5, 6, 6.5. Mortgages rate are going up. So in USA, most of the businessmen are not, very much familiar with this kind of a higher interest rate. And chances are you see going forward some slowdown in US earnings as well. And when US companies are slowing down, chances are the IT spend, the IT budget will be, they will reduce their IT budget going forward. And that may impact our IT companies up to some extent. This problem will last for at least, take my words, for 180 days, right? And because of that, the Nifty upside is capped on the maximum side till June 2023 up to 19,038, which the level I gave, I think 4 5 weeks back, right? And my December, my target was around 18,800, 900. The Nifty made a high of 18,087, and in future it made a high of 19,000, roughly thereabouts. But we normally go with the spot rate. So this is on the fundamental side. On technical front, so you are clearly below EMA 10. You are clearly below anchored VWAP level. You are clearly below EMA 21. You are clearly below EMA 63. So your short term, medium term trends are down. You are above EMA 200 or SMA 200. So it means that your long term trend is still up, but in that still, in a long term trend up, you are down in a shorter term oblique medium term time frame. So let me explain this entire scheme of things in Hindi, right? So आप उसको ऐसा समझ के चलिए कि फंडामेंटली जो है ग्लोबल थोड़ा सा दिक्कत है, एंड उसकी वजह से आ सकती हैं, या खराब नहीं भी आई तो अच्छी नहीं आएंगी, और अच्छी नहीं आएंगी तो मार्केट उतना बढ़ेगा नहीं. सो मार्केट का अपसाइड कैप है ना. मार्केट बहुत ज्यादा लंबा मुझे गिरता हुआ दिख रहा है और ना बहुत लंबा बढ़ता हुआ दिख रहा है, और उसके पीछे रीजन है ग्लोबल इकोनॉमी. बट डोमेस्टिकली आपको इस अगले 3-6 महीने में बहुत मिड कैप में, जहां पे लोकल एक्सपोजर जिन कंपनीज का ज्यादा है, वो कंपनीज आपके लिए बहुत बड़ा पैसा बनाकर दे सकती है अगले 6 महीने में. जैसा कि अभी आपने लास्ट वीक में हमारी रिकमेंडेशन पे TWL वगैरह में, अभी भी TWL आज जितनी गिरी मार्केट में भी अपने भाव से 30% ऊपर है 6-7 दिन में. और आपको क्या चाहिए? सो उन कंपनी से मिलेगा, बट सारे आपको उस तरह के मेरे स्टॉक्स भी नहीं होंगे, कुछ गिरेंगे भी नेचुरली. बट मैं आपको जस्ट एग्जांपल के लिए बोल रहा हूँ कि आपको स्टॉक पिकिंग पे ध्यान देना है. इंडेक्स पे ज्यादा ध्यान आप मत करके चलो, बिकॉज इंडेक्स पे आपको बहुत बड़ा पैसा मेरे को नहीं लगता है कि यू विल बी एबल टू मेक, राइट? सो इंडेक्स में बहुत बड़ा पैसा नहीं बनेगा.
बैंकिंग थोड़ा ठीक कर सकता है इस क्वार्टर में, बैंकिंग में डू वेल दिस क्वार्टर इन टर्म्स ऑफ अर्निंग्स, बट बैंक निफ्टी में भी काफी रैली हो गई है। मंथली चार्ट्स पे थोड़ा बैंक निफ्टी ओवरहीटेड लग रहा है, तो वहां पे भी ओवर द टाइम पीरियड थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आती रहेगी। वो आप देख रहे होंगे कि वो 44,000 क्रॉस करने में उसको थोड़ा स्ट्रगल हो रहा है, तो थोड़ा आप लोग ध्यान में उसको रखेंगे। अगर मैं डेरिवेटिव डेटा की बात करूं, सो नाउ so technical fundamental done, technical also done, technical structures on the short term to medium term is little weak, and in long term is still positive, so there is no doubt. Now let's come to F and T is done. Let's come to D, which is derivative. So in derivative markets, if you see on 5th Jan 2023 Sorry to expired. disturb you, sir. Sir, Yes. can you please repeat हलवा सेरेमनी वाला लॉजिक इन हिंदी? नहीं, वो नहीं कर सकता, बिकॉज वही तो ट्रेड सीक्रेट है बेटा, वो बोल देंगे तो फिर क्या फायदा है। ओके ठीक है, सर। वो नहीं बोल सकते, वो वही किताब में नहीं मिलेगा, करोड़ रुपया भी लोग दे के आएंगे तो नहीं मिलेगा। ठीक है, तो वो नहीं बोल ओके सकते। जो सर। बोल पा रहा हूँ उसको भी सुन लोगे तो आपको 2-5 करोड़ रुपए बन जाएंगे। अब जो मैं बोल रहा हूँ ओके। आप उतना ही हाँ, पे ध्यान कुछ दो, लोगों ने ठीक है। लेट ज्वाइन कहते हैं ना, इसलिए कोई बात नहीं सर। हाँ, वो नहीं बोल सकता, उसके पीछे प्रॉब्लम है। ठीक है ना, ओके सर। वो ट्रेड सीक्रेट्स हैं या जो इंस्टीट्यूशनल क्लाइंट्स हैं उनको ही बोलते हैं, उनको भी उसका लॉजिक क्या वो नहीं बोलते, उनको बोलते हैं ये सौदा कर लो उसमें पैसा बन जाएगा। ठीक है, सो चलो, तो लेट्स बैक टू डेरिवेटिव। सो उसमें क्या है कि देखो, अभी जो निफ्टी का पुट कॉल रेशियो है दैट इज रियली रियली ओवरसोल्ड। सो आपको हो सकता है कि छोटा मोटा बाउंस कल आपको थोड़ा मिले, 150 पॉइंट का बाउंस मिलेगा आज। किसी बड़े लॉन्ग साइड फंड ने नहीं बेचा है वो, क्योंकि ईएमए 63 टूटा है, और ईएमए 63 जब भी टूटता है ना, तो जो हेज फंड की पोजीशन होती है ना, उनका स्टॉप लॉस होता है ईएमए 63। ये आपको मैं ट्रेड सीक्रेट बता रहा हूँ। ठीक है, आप इसको बस इतना यूज कर लो, आपकी फैमिली और आपका पूरी लाइफ के लिए भला हो जाएगा। जब भी ईएमए 63 टूटे ना, 2-3 दिन के लिए एफएनओ बंद कर दो। इतना भी करोगे ना तो आप अपने करियर में, पर क्लाइंट में बोल रहा हूँ, चाहे आपका कितना भी छोटा अकाउंट है, बिकॉज अभी आप 10-20 लाख का होगा, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपका पोर्टफोलियो भी 10-15 करोड़ का हो जाएगा। आप हर साल अपने पोर्टफोलियो का 10% लॉस बचा लोगे। कितना बचा लोगे? 10% एवरी ईयर। स्टॉप डूइंग एफएनओ बिलो ईएमए 63। और कब ईएमए एफएनओ स्टार्ट करने का है? जब मार्केट ईएमए 21 को रिक्लेम कर ले। 63 के नीचे बंद करने का है, 63 के नीचे बंद करने का है, एंड ईएमए 21 के ऊपर चालू करने का है। अगर कोई बड़ा पोर्टफोलियो, उसको 100 करोड़ भी बच सकता है, सिर्फ इतना कर लेगा लाइफ में, तो 100 करोड़। बिकॉज ये दो इंपॉर्टेंट लाइंस हैं जो इंस्टीट्यूशंस यूज करते हैं। ठीक है, अब आप में से कुछ कह सकते हो लोग कि चार्ट्स आर स्लेव्स टू अर्निंग्स, एंड बट स्टिल आई एग्री विथ यू दैट चार्ट्स आर स्लेव टू अर्निंग्स ओनली इन लॉन्ग रन, बट चार्ट्स आर स्लेव्स टू macro variables, global markets, short term liquidity, and market positioning in short term. So if you want to judge the short term, you have to see macro variables. Second is derivative or market positioning, global markets, and short term liquidity. These are the 4 things which will determine the price action. सो क्या होता है कि आप में से जो बहुत सारे जो लोग हैं जो नया टेक्निकल कैंडल स्टिक सीखे हैं, उनको लगता है प्राइस एक्शन फॉलो कर लूंगा तो प्राइस से पता चल जाएगा। अरे प्राइस इन 4-5 वजहों से तय होती है। अगर आपने ये 4-5 वजहें सीख ली तो आप प्राइस को तय कर दोगे। मैंने कल मार्केट खुलने के पहले आपको बोला था 18,200 कॉल का प्रीमियम 70% उड़ जाएगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूं मेरे को पता, मैं ही जानता था, जो भी मेरी तरह स्टडी करता हूं सबको पता था। अब उसमें आ जाती है कि आप कितना एग्जीक्यूट कर पाए, आप उसको कितना भुना पाए, आप उसमें कितना प्रॉफिट ले पाए। अगर सिर्फ आप प्राइस एक्शन को देखते रहोगे ना तो 18,100 के नीचे सेल आया, उसके बाद निफ्टी 50 एक बारी बाउंस भी आया, उतने भी तो आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाएगा, राइट। सो अभी मैं उस पे आता हूं, तो डेरिवेटिव मार्केट्स बहुत ओवरसोल्ड है। निफ्टी का पीसीआर, वीकली पीसीआर 0.55 सस्टेनेबल नहीं है। अगर कल गैप डाउन ओपनिंग होती है तो एक बारी बाइंग आएगी, और वो बाइंग का लेवल मैंने अपने जो सब्सक्राइबर है उनको भी दिया, आपको भी दे देता हूँ, 17990। अगर कल ये पॉइंट आपको दिखता है निफ्टी में 17990, तो एक आप
50 पॉइंट के स्टॉप लॉस से एक छोटा सा ट्रेड आप, अगर आपकी कैपेबिलिटी है, आप अपना रिसर्च करके ले सकते हैं 100-150 पॉइंट्स के बाउंस के लिए। ओनली इवन 50 भी नहीं, 30-40 पॉइंट के बाउंस से भी ले सकते हैं। बैंक निफ्टी में भी पीसीआर सेम 0.56 है। और निफ्टी में एक इंपॉर्टेंट डेटा है जो मैं आपको बोलना चाहूंगा, वो आप देख सकते हो आप लोग। तो निफ्टी में क्या है कि आपका जो Navneet, you have to mute somebody, right? I don't know who is speaking in between. So please understand here, right now, roughly thereabouts 13.556 lakh, 13.56 crore call options on the are written, and 7.43 puts, 7.34 crores puts are already written, right? So that's why the difference between put and call contracts are 6 crores, greater than 6 crores. So look at the size, right? The sample size is really, really huge. So 13.56 crore call writing and 7.43 crores put writing. It means that call writers are so bearish. Even everybody is bearish at this point of time. And everybody is seeing the market will go down. And chances are, I'm not saying market will not go down, but chances are before that market may surprise you on the upside. When I say upside, maybe 100 or 150 points rally may come. And if you manage to close above 18,310, 18,310 on a spot level, right? You may see again, I'm still hopeful, 18,700, 18,800 before halwa ceremony, right? So these are the levels only, valid when you close above 18,300. Then you may see another upside of 500 points. And for next 3 to 6 months, my view for this market is 16,900, 800 on the downside max. This is the range, and 19,100 on the upside. This is the range, or 19,038 to be precise. This is the range I am trying to play. So whenever the Nifty will come to 16,800, I will try to buy mid cap and small caps in a truckload fashion. I'll buy with any amount, right? So I may break some of my asset allocation rules and I buy more equity and I keep less cash, or I may keep less FD or bonds, right? And I buy more. So this is what this is what I am planning right now. This might come or might not come, but this is my plan, right? And if at all there is any change in plan, I will update all of you. So ये मेरा प्लान है, 16,900 जब भी आता है अगले 2-4 महीने में, उधर मैं बड़ा बाइंग करूंगा। अभी मेरा फोकस ट्रेडिंग पे है, और उसमें भी जो हाई रिलेटिव स्ट्रेंथ वाले स्टॉक्स हैं, where the RS rating is very high and I see relative outperformance, I am buying those stocks. And recently to some of our subscribers, we have recommended all these railway stocks and all those, and they are still holding up well, right? So that is important. And in big money move, and so D is done, derivative part is done. In big money move, because I see a lot of short selling and this in derivative segments, and because of that, market may surprise you on the upside for at least few days. In big money move side, right, all bets will be off if Nifty managed to close above 17,900. Then I have to negate my bullish view and I have to go neutral to negative, or maybe at least neutral. So I'm positive for at least 1-2 days, or maybe for the next week I'm a little bit positive because of certain time series analysis and time cycle analysis. I cannot tell you the exact logic for that, but next week should be bullish, right? What is big money? In big money move, what is happening? FIs are selling aggressively in cash markets,
and in FO markets also, and they are neutral to negative, and I want to see their shareholding patterns for this quarter in November or December, what they have, or October, November, December, what they have bought. So that shareholding is we will start getting in next few days. In some of the companies they will start disclosing, and I feel they have bought some fertilizer stocks. So in one sector where the big money move is visible is fertilizer stocks, and FIs are not comfortable at current market price in IT stocks, and they are putting some buy reports on banking stocks, but I think they are using this upside to reduce their position in banking stocks, and they are booking partially in banking stocks. So you must have observed the price action of IndusInd Bank today. IndusInd Bank came up with a business update. The stock went up 20-30 rupees and then closed 60 rupees lower. So when any company is giving very good business update and on a same day stock is closing 5% lower on a positive FIS brokerage report, it means that FIs use this positive price action to dump the stocks. So if you are a blind follower of price action, just imagine what has happened to you. Just imagine IndusInd Bank gave you the breakout above 1260. It opened at 1270 only, and then it fell 60 rupees intraday. What will be your situation? You will be losing 27,000 rupees in one lot. And let's say the one lot margin is 2 lakh. You are using 10-15% of your capital in a single day. So be careful with this obsession about this plain price action trading. You have to mix everything. You have to mix macro, you have to mix global liquidity, you have to mix global market factors like dollar index, bond yields, even crude, even gold prices, and alternate asset classes prices all together to form a view. And once you form a view, that will be a view with a conviction, and that view will make money for you. So until unless you don't have the conviction, you will be not able to make money out of the market. So you need to have the conviction. So Anand, that is done. So I see no panic, but I also don't see no euphoria in the market. So no panic, no euphoria. This market will remain sideways for next 3 to 6 months. This market will be extremely stock specific and only for skillful traders. Those who can manage to buy in panic and sell in euphoria, that person will end up making more money as compared to simple price action trader. This is my view for next 3 to 6 months. If at all there is any change in view, I will come live and I'll update about my fresh view to all of you. So that's it from my side. Navneet, if you have, we can take few selective query if we have, right? हिंदी Okay, इंग्लिश sir. आप किसी में भी बोल सकते हैं, ऑडियंस किसी में भी बोल सकती है, उनको पाबंदी नहीं है, बिकॉज बहुत सारे डाउन साउथ से फ्रेंड्स वो हिंदी नहीं समझ पाते, तो इसलिए मैंने पूरा कोशिश किया कि इंग्लिश में ही उनके लिए कर दूं, बट फिर भी मैंने हिंदी भी किया है. एक बार फिर से समराइज कर दूं, मार्केट में मुझे ना बड़ा तेजी ना बड़ा मंदी लगता है. मार्केट एक रेंज में रहेगी 16,900 से लेके 19,000 तक. 50 में नहीं होगा. स्मॉल कैप मिड कैप्स में आपको इस लेवल से भी अच्छा पैसा बनने के चांसेस बहुत ब्राइट है. If we have any query we can take that. ले सकते हैं क्वेरी, ले लो. 10 मिनट के लिए ले लो. चलो 9:40 में वाइंड अप कर देना. ठीक है. Your hand. आनंद तुम ट्राई कर लो, शायद नवनीत यस का सर. कुछ. हाँ मैं कर लेता हूँ. मैं I've added Mr. Dinesh. He can speak now. Hello, sir. Sir, I have started following you from last couple of weeks only, and your analysis are very good, and you're doing great service to the retailers. So, thank you very much for your service. Sir, another point which I want to ask is that you have mentioned about EMA 63 many a times on your charts and on your discussion. So, this EMA 63 is on daily time frame or hourly or?
Always in daily time frame. Always in daily time frame until and unless I don't mention specifically. So for traders, EMA 63 is important. For investor, EMA 63 is important in a daily time frame. For investor, EMA 63 is important in weekly time frame. So for long-term investor, EMA 63 in weekly time frame. For medium to short-term traders, EMA 63 in daily time frame. Okay. And sir, how you correlate the internet? Because there was a time when people used to say that international market and Indian market is not correlated. But somehow nowadays I see there's no movement in the last 5-7 days. People were expecting a lot of rally post Christmas, post New Year. So We were not shorter expecting outlook. What? So we were not expecting any rally for sure. At 18,800, I told you, exit from the market, go slow, go slow. You must have observed my 10-20 messages Yes. around that, right? And after that, Yes, Nifty I fell observed this. 1,000. I could. So after that, Nifty Sorry, fell sir. 1,000 points. At Yes. 17,800, we made a buy call. And after that, Nifty rallied some 450 points or 500 points. Bank Nifty rallied some 1,800 points. And some of our stocks rallied 20-30% in 7-8 days. So the idea here is you have to be opportunistic investor, right? You cannot be a blind bull in this market where the global liquidity is not in abundance, right? The global liquidity is going away every day. So you have to buy fear and panic, and you have to sell extreme greed. That's it. Nothing else. Until and unless Fed is going to change their stance. So let's say in tomorrow Fed meetings, if you see any change in stance from Fed, then the approach will be different. But I don't see any change that this Fed is going to do very soon. So they will remain like this for 1-2 months at least. And after that, they may change the stance. And if at all they are changing the stance, then we will change our stance. And we will also start chasing the breakouts. But till the time Fed is not changing, I'm not going to change my theory and I'm not going to change my style. Okay. And sir, in between you. So 1-2 question per audience, right? Otherwise, it Okay, will sir. be like. Okay. Yeah. Okay, sir. Thank you very much. Yeah. Navneet, next, please. Navneet, Anand, किसी और को भी ले लो, please. जल्दी करो. Sir, we have not got any request. If someone wants to ask any question, please raise your hand. मेरे को बहुत लोगों का दिख रहा है raise hand. चिराग बारावलिया, सुख गिल. So then you can only add them. Allowed to speak. Ankit, you can speak if you wish to speak. Nishant, Shekhar. Sir, I think some issue with your Telegram because me and Navneet are not able to see any request. I'm also trying to add, but I'm not able to add. So guys, we are really sorry, right? So मैंने तो सोचा था कि query ले पाऊंगा, but I don't know. तो इनका कैसे फिर ऐड हुआ जो आए थे दिनेश जी? वो टाइम पे मुझे एक उनका हैंड रेस दिखा था. I think now some people are getting add. So you just try. If you manage to do that, it's fine. अदरवाइज तुम लोग क्या कर सकते हो कि ट्विटर पे भी 2-4 लोगों की क्वेरी है तो वो ले सकते हो, पूछ लो कि भैया किसी को पूछना है कुछ तो. या किसी ने, because we have like 800-900 people in this. Yes. So I'm also not able to add. This is quite strange. Some issue with setting, I think, यार. प्रकाश सर, आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ कुंदन जी, आपकी तो आ रही है, प्लीज बोलिए. हाँ जी, थैंक यू सर, थैंक यू फॉर ऑफरिंग तो योर आप लोग ये कर सकते हैं कि आप सर. लोग मैं दो क्वेश्चन कहना. आनंद का टेलीग्राम अगर आप लोगों को दिख रहा है तो आप हेलो. आनंद को क्वेरी भेज दीजिए. आनंद क्वेरी रिपीट कर देंगे तो मैं ले लूंगा. Yes, sir. आनंद, नवनीत या किसी को भी आप हाँ, क्वेरी sir. भेज सकते हैं. कुंदन जी पूछिए अपना सवाल. Sure, sir.
सर मेरे दो छोटे छोटे क्वेश्चन है, मैं आपके साथ जुड़ना चाहता हूँ। मैं कलकत्ता में रहता हूँ। मैंने व्हाट्सएप में भी मैसेज किया था, लेकिन मुझे बताया गया था कि 5 लाख के नीचे पोर्टफोलियो होने से नहीं मैंने आप ज्वाइन करो। हाँ, तो ये आपका बड़प्पन है सर, क्योंकि मेरे पास 6 लाख रुपए थे सर, फिर भी मुझे बोला गया कि नहीं आप मत ज्वाइन करो। तो नहीं, जबकि अभी आपके जो टेलीग्राम में मैसेज वगैरह आते हैं उसमें लिखा होता है कि आप 4 लाख से नीचे अगर कोई पोर्टफोलियो हो तो मत ज्वाइन। नहीं, तो हम सर मेरे आपको पास थोड़ा 6 लाख सा का पोर्टफोलियो है, मैं तो ज्वाइन कर सकता हूँ ना नेक्स्ट। नहीं, मैं आपको वही चीज अपडेट कर रहा हूँ, सुनिए हेलो। मेरी बात को। मेरे को मार्केट थोड़ा खराब लगता है, ठीक है। जी सर जी। आप छोटे इन्वेस्टर हो, आपका 6 लाख है, जी 7 लाख है, अभी आपका पैसा लग जाएगा, ठीक है। तो अभी अभी आप मत आओ, आप 2-3 महीने बाद आओ, जी प्लीज। आप समझो बात को। आप आओ, आपका पैसा लग जाए, मुझे अच्छा नहीं लगेगा। आप जी फीस सर। दोगे और आपको पैसा लग जाएगा। आपके लिए अभी ट्विटर और वो टेलीग्राम के मैसेजेस काफी हैं, अभी आप प्रोडक्ट मत सब्सक्राइब कीजिए प्लीज, ठीक है। आप थोड़ा सा राइट एक सर, दो ये महीना आपका देख बहुत लो। बड़ा बड़प्पन है, लोग तो। जी आप सर। 1-2 महीना देख जी लो, सर। अगर मान लो निफ्टी सर तो 70,000 तक आ टीम को प्लीज। तो मैं बोल दूंगा, मैं पक्का बोल दूंगा। जी सर शशि बताएं। होगा, वो शशि होगा, नहीं तो विपुल सर मैं होगा, उन लोगों ने रिप्लाई किया होगा। मैं बोल दूंगा कि ऐसे मतलब थोड़ा सा वो देख के बोले। वो देखो, मेरे को निफ्टी 17,000 तक लगता है मार्च तक, सर अगर सर आया प्लीज। तो उस समय आप कर लेना, जी ठीक है। सर। जी सर। थैंक यू, थैंक यू। जी जी सर, मुझे बोलने दीजिए, एक बात मेरी रिक्वेस्ट है सर। सर बताएं। ये जो शशि भैया के नाम लिया है आपने, नवनीत भाई साहब को नाम दिया है, उनको मेरा नाम लिखवा दीजिएगा प्लीज, कुंदन शर्मा के नाम से, ठीक है कि कुंदन जी, मैं जब उनको कांटेक्ट करूँ तो अपना नाम दूं और मुझे ज्वाइन करने का मौका दें। हाँ जरूर सर, जरूर। और मुझे एक क्वेश्चन और पूछना, बहुत सिंपल क्वेश्चन जो सबको है सर। एक हम सबको जो 900 हम लोग सुन रहे हैं, उनके लिए एक न्यू ईयर कोई गिफ्ट दीजिए सर हम लोगों के लिए। और दूसरी बात सर, जो आप सेक्टर वाइज बोल रहे हैं, जो मैंने हमारे कंट्री के अंदर जो कंपनियां काम कर रही हैं, तो सर उसका भी प्लीज कुछ हिंट दीजिए ना सर। हमारी कंट्री में देखो, जैसे तो मैंने कुछ समझ में बोला नहीं ना आ रहा, आपको। जो इंजीनियरिंग कंपनियां नहीं, हैं मैं या आपको जो। बोल रहा हूँ, सुनिए सुनिए। आप रेलवे में ध्यान रखिए, ठीक है। रेलवे में जी मैंने सर। TWL आप लोग को दिया था 5-6 दिन जी पहले, वो जी 30% ऊपर है, ठीक है। तो अभी थोड़ा मार्केट गिरेगा ना, तो मैं नया जी स्टॉक सर। जी आपको दूंगा। सर। जी सर। आपको मतलब मैं नया स्टॉक दूंगा, जी जरूर दूंगा। सर। थोड़ा सा वेट कीजिए ना, ठीक है। जी थोड़ा वेट कीजिए कुछ जी दिन का, मैं सर। दूंगा जी आपको। सर। जी सर, और दूसरी बात सर, सर मार्च तक प्लीज अपना ये, मार्च में होली के समय सर प्लीज खोलिएगा अपना डिस्काउंट वाला जो 25, जिससे हम लोग सब्सक्राइब कर सकें उस समय। नवनीत नोट कर लेना, हाँ प्लीज। आनंद, हेलो। Sure, यस sir. सर। आनंद नवनीत नोट कर लेना, होली में तुम लोग कुछ दे देना, ठीक है। Done, sir, ठीक है, done. ओके। ओके, थैंक यू जी, थैंक यू कुंदन जी। ओके, थैंक यू। और थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। और कुछ लोग Sir, ऐड हुए क्या? Jayesh का क्वेश्चन है हम्म about infrastructure recommended in last session. Should we carry forward the stock in this segment? नहीं। मैं फिर से रिपीट कर दूं, IRB में आपका 20-25% का प्रॉफिट बन गया एक हफ्ते में। जो सब्सक्राइबर है, ये लगता है राइट, सब्सक्राइबर Sir, है तभी तो उन्होंने लास्ट सेशन अटेंड किया होगा ना, अदरवाइज बाहर yes, sir, वालों को yes, थोड़ी sir, मिल yes, जाएगा। sir. देखो, आपको IRB में मैंने 320 में बोला निकल जाओ, तो वो आपको निकलना था। होपफुली आप निकल गए होगे, और नहीं था या 15 था, मैंने देखा नहीं। नवनीत एक बार देख के कल अपडेट दे देना कि अगर जिसके पास रह गया वो निकल जाए। उसमें 15-20% ठीक है सर. 25% आपको बन गया है। मेरा व्यू पॉजिटिव है। और स्टॉक्स जो मैंने रिकमेंड किए वहां पे और वाले जो नए वाले, वो नया नाम नहीं ले सकता, वो कंप्लायंस का एंगल है, भी 6 दिन अभी नहीं हुए उनको खरीदते हुए, तो अभी वो नहीं बोल सकता मैं। बट या मतलब अभी मेरे को अगर बेचना भी हुआ तो मैं नहीं बेच पाऊंगा अगर अभी नाम ले लिया तो। सो तो उसमें तो आप रखो, उसमें अभी सेल नहीं आया है तो मैंने नहीं दिया है। ठीक है, मेरा व्यू पॉजिटिव है। बट मैं जहाँ पे 20-25-30% बन रहा है, वहां पे एक बारी मैं थोड़ा सा निकालूंगा, बिकॉज मेरा अगले 2-3 महीने का व्यू उतना बुलिश नहीं है कि मैं 30% वाले प्रॉफिट्स भी छोड़ दूं, इसलिए मैं थोड़ा सा बुक कर रहा हूँ। बाकी लॉन्ग टर्म स्टोरी में कोई चेंजेस नहीं है, स्टॉक और यहाँ से 20-20, 25-25% बढ़ जाएंगे। बट उम्मीद है कि जो स्टॉक्स मैंने बेचे हैं वो मैं 10-10%, 15% नीचे ले पाऊंगा, इसलिए बेच रहा हूँ। नवनीत, आई होप आई हैव आंसर्ड इट। या Yes, sir, yes, sir. Sir, संकेत का क्वेश्चन है, is timing markets with small capital in cash good for creating wealth? नहीं, छोटे कैपिटल से आप अगर टाइमिंग करोगे तो क्या ही बना लोगे,
वो तो आपका टाइम खराब होगा। आप अपना जॉब ज्वाइन कर लीजिए, अपने फादर का बिजनेस ज्वाइन कर लीजिए, अपना बिजनेस खोल लीजिए। उसमें क्या ही, आप साल के अगर 1-2 लाख रुपए ज्यादा भी बना लोगे तो क्या ही हो जाना है आपका। उससे तो आपके बच्चे का स्कूल का फीस भी नहीं जाएगा। सो इट्स नॉट एडवाइजेबल। ओनली टाइम द मार्केट इफ यू हैव लार्जर कैपिटल, अदरवाइज इट इज नॉट एडवाइजेबल। Okay, sir. Sir, अनुराग का क्वेश्चन है, is it good time to create portfolio in good funda stocks for 4 to 5 years or we wait for 17,000 level? No, so if you are buying for 4 to 5 years, then 17,000 is not, that level is not at all valid for you, right? Because from 18,100 to 17,000 is hardly 5-6% downside. So you should start buying, right? And hope that you, so let's say you have 100 rupees, right? And you are gonna do SIP also, because you'll be getting the salary or you'll be making some money out of your business. So please understand, you divide your capital in 3-4 parts. Normally, if I'm in your position, what I'll do, I'll divide my capital in 3-4 parts. First 25% I will put around 17,800, 700. Next 25% I'll put at 17,200, 300. I will try to put around below 17,000, and maybe final around 16,700 or 16,800. That's it. So this will be my plan, right? If and I'll continue my SIP, because I know in 4 years time Nifty earning will be around 2,000 rupees or maybe 1,800 rupees. And if that is the case, then and even if you assign a PE of roughly 20 times, Nifty will be 34-35,000 in 4-5 years. So in 5 years, Nifty will be 35-36,000 for sure. So that doesn't matter that whether you are buying at 18,000 or 17,000. The levels which I am giving, that this timing thing which I spoke, it is mainly meant for traders, hardcore traders, not for investors. For investors, they can easily buy few stocks and they can continue to buy in panic and fear and continue to hold on. But in our case, we are known for trading. We do a lot of investing also. But for investing, we only make 17-18% kind of a CAGR. In trading, we make 25-26% kind of a CAGR. Sometimes much more than that on a smaller capital. On a bigger capital, we make 25-26%. When I say bigger capital, the capital is not less than 25 crores, right? So, and when I say higher ROI, so if the capital is around 2-3 crores, you can make 30-40% kind of a CAGR also, right? But totally depends on the skill, right? It is not possible, not guaranteed. Totally depend on the market cycle and the market movements. Okay, sir, your view on PSU stocks. So now PSU banks are more or less done. Railway will do well. Railway will continue to do well. So at any 10-15% dip, you can buy, because here the story is they are getting abroad. They are going out also doing business, a lot of businesses, and getting business from abroad as well. Are just humongous. They don't have people to execute those order books. So railway will be one sector where I'm clearly betting big. And in PSU, defense is now a crowded trade. PSU bank is a crowded trade, so they may lag for 3 to 6 months. But overall, this defense will make a comeback, and this railway will do well. Rest others will lag. Maybe a couple of power finance companies may do well. So recently in our webinar, we have recommended PFC at 142. In one lot, people made 1 lakh in 1.5 days. So that company may still do well, but you try to buy around 135, 140 if you get a dip. So that's it. Couple of power finance companies, railway, and then your defense. But defense after 3 to 6 months, because couple of defense companies from PSU sectors are entering their stage 3, which I can clearly see from the charts, and their earnings acceleration will fade going forward. So maybe they may lag for 3 to 6 months. Okay, sir.
सिर्फ विभूति बिस्वाल का सवाल है, आउटलुक ऑन इंश्योरेंस एंड एएमसी कंपनी. Outlook on insurance and AMC companies. So I think recently, Navneet, if you can recall, Anand, you can recall, I have tweeted about this, that I have removed my bearish stance on insurance sector. Yes, Correct? sir. Yes, sir. Maybe 10-15 days back, Yes, when sir. 2 weeks ago. that media guy, I don't, Darshan, tweeted about the chart of ICICI Prudential, and when I said that this company is in clearly downtrend and you should not fight, and then that stock fell another 20-30 rupees where he gave a buy call, and after that the Yes, stock sir. is now recovering. So I feel insurance will do well from here on. This sector can give you positive alpha over Nifty. It's a large sector, but LIC may do well, right? Can see 900 rupees, so 20% kind of a return, where the Nifty will give you 10% kind of a return this year. So 10% alpha over Nifty you can get from the insurance sector as a whole. And which one is second? AMC companies. AMC, I don't know. Yeah, the AMCs and brokers, they are more or less the same. It's a low margin business, right? And with a lot of corrupt practices, these fund managers do a lot of front running and all those stuff. So I really don't. But if you want to try your luck, you can try your luck with HDFC, AMC, or those sort of stocks. But not really. I don't know. I don't have a clear view on this. Not a Yes, great sir. sector to be in. सर आकाश ठक्कर का सवाल है ऑन मेटल सेक्टर. मेटल अच्छा लगता है, अभी दिया था ना आप लोगों को 104 में टाटा स्टील, वहां से तो Yes, sir. 15-20 का बन ही गया. चाइना खुलेगा तो मेटल चलेगा. अब देखो चाइना कितना जोर से खुलता है, ठीक है ना नवनीत? अगर वो जोर से खुलता है Yes, तो sir. फिर मेटल थोड़ा बहुत गिर के फिर चल जाएंगे. देखो 2-3 चीजें हैं. Okay, sir. फेड कैसे आगे बिहेव करता है, बिकॉज ये ग्लोबल सेक्टर है, ग्लोबली डिसाइड होता है. तो फेड कैसे चलता है, किस तरह की बातें करता है, और दूसरा क्या है कि चाइना कैसे चलता है. इंडिया का कुछ इसमें है ही नहीं, मतलब इंडिया के कोई औकात ही नहीं है. आई एम सॉरी बट दिस इज द हार्ड फैक्ट. सो ये जो डिसाइड करेंगे डॉलर का मूवमेंट और चाइना का ओपनिंग अप, ये दोनों डिसाइड करेंगे कि मेटल का फ्यूचर क्या होगा, शॉर्ट टर्म में, मीडियम टर्म में. लॉन्ग टर्म में नेचुरली ठीक लगता है, स्टोरी अभी भी इंटैक्ट है. Okay, sir. Sir, your view on OMCs and especially Reliance. Reliance is struggling because I think I have spoken about this Reliance thing, right? The retail business is struggling. And I think I have recently tweeted about this. I'm going slow on white goods sector oblique retail sector, correct? I have, Yes, sir. I think I have put it one tweet Sir, regarding this, in right? mid December, I guess. Yes. And after that, I think DMart also reported a very muted set of business update. And overall, I can see the Reliance retail is not doing great. And if Reliance retail is not doing great, because that business for Reliance normally get a forward PE of 60-65 times. So the high PE business is not doing well for Reliance. So maybe, and the companies like Reliance globally are down 30-40%. And if you take the only the retail part of the business, the fair value for Reliance for me is around this same level, 2500 levels. So you will not get a great upside from here on. OMCs may do well. So I have a small position in BPCL, but I think we bought it some month back, and that way we are not making any money in BPCL. But I have small position, but I have bought it for some dividend yield and all those stuff. And I may hold for like 1-2 years. So the BPCL we have some position, otherwise we don't have much interest, right? And in Reliance, I have some straddle positions which I am managing, not making a huge amount of money, but trying to manage. Okay, sir. Sir, your view on Gujarat Fluoro and Aditya Birla Capital. Today, I think we got some negative news flow around this idea, correct?
Yes, sir. Correct, na? Promoter is not putting money or something of that sort. I haven't gone through the entire print, but I heard that management is not committed to put fresh money in idea, correct? Yes, sir. And if that is the case, then AB Capital may suffer in short term, because AB Capital is a bank guarantor for idea, and if that bank guarantee get exercised or invoked because of XYZ reason, then AB Capital may face some kind of a downside. So not having a clear view on AB Capital or Birla Group companies for a few days because of this news flow. Once we have the clarity around this news flow, then we will have a clear view. I have to go through that fine print. I haven't gone through that. Sir, Anand Lal is asking about details of HNI advisory. ये देखो ना, अभी मैं इसके बारे में बोलूंगा ना नवनीत, तो लोगों को लगेगा कि हम कोई प्रमोशन कर रहे हैं, सो वो प्लीज नहीं करते हैं ना, वो आप अलग से पूछ लीजिएगा आनंद लाल जी प्लीज। या बहुत बार वो पिंग हम हो लोग गया के था एथिक्स में नहीं आता है कि मैं कोई पब्लिक पे बात कर रहा हूँ और वहां पे मैं अपने प्रोडक्ट्स के बारे में बताऊं, मुझे अच्छा नहीं लगता, वो मेरे एथिक्स में आता ही नहीं है। वो आप व्हाट्सएप पे पूछ लीजिएगा और शशि या तो रिप्लाई कर देगा जो उस समय व्हाट्सएप पे रहेगा, नहीं तो कभी कभी व्हाट्सएप मेरे पास रहता है तो मैं भी रिप्लाई करता हूँ, तो मैं भी कर दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। श्योर सर। सर एक्चुअली मैंने 2-3 बार पूछा था बट मेरे को रिप्लाई नहीं मिला है उस चीज पे। सो सर इसमें कुछ भी नहीं है, आप उसको ऐसे समझो कि आपका अगर पोर्टफोलियो 2-3 करोड़ का है तो आप HNI एडवाइजरी आप ले सकते हो, उसके नीचे है तो आपके लिए वो जो FTDB मॉडल का सब्सक्रिप्शन है वो सफिशिएंट है। आप HNI में क्यों अपना उतना पैसा देके और अभी इस लेवल पे क्यों अपना उतना करोगे आप, ठीक है? ओके सर, थैंक यू। हाँ जी सर अंकित जी शंकर जी कुछ बोलना चाह रहे हैं, एक मिनट नवनीत सुन लो। हाँ Yeah, प्लीज can you बोलिए। please give us your view on SBI cards, please? SBI card is struggling, right? And globally, all these credit card companies are struggling, if you see, right? But the valuations are cheap. I think the stock already corrected some 30-40% from all-time high, but still, stock is still expensive. And all these new platform-related or transaction-based companies are struggling. So it may go through some time corrections. You may not see a big price correction in this stock below 800, so around 750 740 you'll see some of the value buying, but upside is also capped up to 900 rupees. So this is the view, 750 900, this is the range for SBI card. Thank you so much. Yeah, welcome. प्रकाश सर, सर एक हमारी वो question न्यू वाली हेलो। हाँ प्लीज। हाँ सर, एक क्वेश्चन आया है फ्रॉम मिस बीजल रिगार्डिंग हाउ वुड बी द मार्केट फॉर ऑप्शन सेलर। No, for option sellers, let's say right now the India VIX is around 15. So the premiums are not, and everybody wants to do option selling, right? Because if you go with this OI contract and all those stuff, 13 करोड़ का OI कॉल साइड में है, 7 करोड़ का OI पुट साइड में है, सब लोग ऑप्शन सेलिंग कर रहे हैं, प्रीमियम्स कैसे ऊपर जाएगा, राइट? सो बहुत सारे लोग आ गए हैं, एक बार ये लोग निपटेंगे अच्छे से, इनको पैसे लगेंगे और उसके बाद आपके लिए ऑप्शन का सेलर के लिए मार्केट अच्छा हो जाएगा। एक दो झटके ऑप्शन सेलर्स को लग सकते हैं आने वाले दिनों में, थोड़ा ध्यान रखें। वो झटके लग जाए उसके बाद ही काम करें, तो एक अगर आप 10-15 दिन नहीं काम करेंगे तो इतना बड़ा कुछ नुकसान नहीं होना। और लेट्स से कि आप अगर स्ट्रैडल बेचते भी है या स्ट्रैंगल्स बेचते हैं, तो जो भी आप प्रीमियम बेचे, आप ये कोशिश करें कि अगर मार्केट EMA 10 के नीचे है तो थोड़ा आप नेगेटिव बायस के साथ बेचे, मतलब कॉल ज्यादा बेचे, पुट कम बेचे, या पुट ना बेचे कॉल बेचे, ये थोड़ा सा आप स्ट्रैटेजी उसको बना लीजिए, ठीक है आनंद? यस सर। तो वाइंड अप कर देते हैं, नहीं तो 12 बज जाएगा। हाँ प्लीज, मेरी एक मीटिंग है 10:30 बजे। हाँ यस, ठीक है ना?
नहीं, और ऑलरेडी सब स्टॉक स्पेसिफिक क्वेरीज ज्यादा आ रही है, सो हाँ, हम बाकी तो फिर नेक्स्ट सेशन में इसको हाँ, कंटिन्यू एक करेंगे। जूम मीटिंग है बाहर का थोड़ा सा, तो उसको भी करना पड़ेगा, वो कमिटेड है। हाँ, ओके, ठीक है, चलो यस। कोई एक एक दो क्वेरी ले लो, चलो दो दो 3 मिनट में ले लो, 10 बजे बंद कर देना, ठीक है। तुषार जी एक आए, वो बोल दो, अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तुषार जी आप पूछ लीजिए प्लीज। हेलो हाँ पूछिए। सर, पीएफसी और रेक के बारे में। पीएफसी और रेक आरईसी रेक के बारे में। अच्छा देखो पीएफसी ठीक लगता है, वैल्यूएशन सस्ते हैं, डिप पे हम लोग भी खरीदार हैं, आप भी अपने लिए देख सकते हैं, ठीक है। आरईसी में भी सिमिलर सिचुएशन नहीं है, लेकिन आरईसी भी ठीक लगता है, तो उसमें भी आप देख सकते हैं। लेकिन ये सर तो चलिए कि आपके लेने के बाद नीचे ना जाए, इसकी कोई गारंटी नहीं है। आपके मेरे लेने के बाद स्टॉक जरूर 10% नीचे जा सकता है, आप ये ध्यान में रखें। सर, एक लास्ट क्वेश्चन था। मैंने लास्ट ईयर में टीसीएस के बारे में मैंने मेरे अपने पापा के पैसे लगाए थे। आवाज नहीं आ रही है आनंद, कैन यू हियर हिम? हेलो सर। नो, तुषार, हेलो you have to be little louder please. आप थोड़ा जोर से बोलिए प्लीज। चलो आनंद दूसरा कुछ ले लो, 3-4 मिनट बच्चे। Sir, this is Anand here. आनंद So या गो question is अहेड प्लीज। regarding auto stocks because they had a very good rally and Maruti was like say 9,500 abhi 8,300 pe hai. So would there be still more downside before the another round? So they have to go through time correction, right? They have to go through Okay. time correction of at least 6 months, because Okay. in India also the RBI will going to hike rates. At least they will hike by another 40-50 basis points. And if that is the case, then of course the borrowing rate will go up, and people who buy all these stuff at EMI, their enthusiasm will surely taper down going forward. And next year, Correct. auto companies will face higher base effect as well, because this year they have done really good business, most of them. Yes. Yes. Right? Next year they will they have to face higher base effects. Correct. And if that is the case, then the earnings will look muted on a higher base. I hope I'm making sense to you. Yeah. Yeah. Absolutely. Yes. So I don't see, they will not generate a lot of alpha over Nifty. So you have to bet on the sectors where you can beat the Nifty by 5 to 8% at least, so that your portfolio will do. So auto will not give you alpha this year. This is my view. Right. One, two stocks like Scots, you may make money where the liquidity is less and the promoter is having interest to keep the stock prices higher. In those stocks, you may make money, but by and large, on index basis, you will be not able to beat Nifty for sure. Correct. Correct. Understood. I hope I'm making sense. Thank you. Yeah. All right. Sure. Sure. Yeah. Thank you. सर एक क्वेश्चन है डॉक्टर सर, विपिन जी का। हाँ, हाँ, वो आनंद, एक्चुअली आपने ऑलरेडी आईटी सेक्टर का व्यू दिया है, बट डॉक्टर विपिन जी पूछ रहे हैं कि इन्फोसिस के रिलेटेड। देखो इन्फोसिस में ना प्रमोटर का बाईबैक चल रहा है, बट उसका भी विंडो बंद हो गया होगा या हो जाएगा 1-2 दिन में, ठीक है, बिकॉज वो रिजल्ट आने वाले हैं, तो वो बाईबैक का विंडो बंद हो जाएगा। लेकिन उनको अभी 4,000 करोड़ का माल मार्केट से खरीदना है। 9,000 करोड़ के आसपास का बाईबैक था, मैं रफली बोल रहा हूँ, एग्जैक्ट नंबर आप लोग वेबसाइट्स पे जाके देख सकते हैं या हम लोग ग्रुप में डाल देंगे आपको। सो 4,000 करोड़ की बाईबैक अभी प्रोमोटर की साइड से पेंडिंग है, बट मेरे को लगता है कि इस क्वार्टर में कमेंट्री थोड़ी सी वीक आएगी, फॉर श्योर आएगी, बट स्टॉक लंबा ना गिरेगा ना बढ़ेगा। सो आप अगर ऊपर में आपको 1540-50 मिले तो आप थोड़े से हल्के हो जाओ, 1480 मिले तो थोड़ा खरीद लो। ये रेंज में ये स्टॉक ट्रेड करना चाहिए, बड़ा ना तेजी है ना बड़ा मंदी है इन्फोसिस। मेरा बुलिश व्यू है, मेरा बाई पोजीशन है। मैंने 1560 में भी लिया है, 1500 में भी लिया है, बट मैंने 1-1.5 साल के हिसाब से लिया है, तो मेरे को कुछ बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा नहीं। और ऊपर की मैं 1620 की कॉलें बेच रहा हूँ, 1650 की भी बेच रहा हूँ, तो मैं धीरे धीरे कॉलें बेच रहा हूँ ताकि मेरी कॉस्टिंग थोड़ी कम आ जाए। आपका अगर बड़ा पोर्टफोलियो है तो आप उसमें ये वाला स्ट्रेटेजी
में इन्फोसिस की कॉस्टिंग आधा से पौना टका घट जाएगी, यानी साल में अगर आप 8-9 टका कॉस्टिंग हटा के बचा लोगे और 10 टका स्टॉक चल गया तो आपको 18-19% का रिटर्न एक इन्फोसिस जैसे लार्ज लिक्विड स्टॉक्स में मिल जाएगा, विच इज अ वेरी गुड रिटर्न। आनंद, एनी मोर सर क्वेरी? सर स्टॉक स्पेसिफिक बहुत सारी क्वेरीज आ रही है और ऑलरेडी 10 बज गए, जैसे आपकी मीटिंग भी है। We will do some other day, ठीक है? I wish यस everybody all the best and कुछ भी नहीं होगा, अगर कुछ होगा तो हम लोग है थोड़ा बहुत बचा लेंगे आपको, आप लोग लंबा टेंशन मत लीजिए, कुछ भी खराब नहीं होगा। ये सब इससे ज्यादा बड़ा बुरा टाइम आप लोगों ने देखा है, जब 18,600 पे मैंने आपको सेल बोला था और वहां से निफ्टी 15,200 आ गई, उसमें जब आप लोगों ने सरवाइव कर लिया तो ये तो 1000 पॉइंट का फॉल ऐसे ही निकल जाएगा, कुछ भी नहीं होगा आप लोगों को, आप लोग टेंशन मत लीजिए, आराम से काम कीजिए, फैमिली के साथ एंजॉय कीजिए, धीरे धीरे पैसे लगाइए, जल्दी में ना लगाइए। बड़ा पैसा नहीं बनेगा इस साल, बड़ा पैसा तभी बना पाएंगे जब पैनिक में खरीदेंगे, ब्रेकआउट खरीद के इस साल बड़ा पैसा नहीं बनेगा, ये मेरा व्यू है, एटलीस्ट फॉर 6 मंथ्स। पहले 6 महीने ब्रेकआउट खरीदने का कोई मतलब नहीं है, जब तक फेड का थोड़ा सा स्लो डाउन नहीं आता तब तक फेड अपना रुख जो है वो नरम नहीं करता। जब तक फेड बहुत एग्रेसिव रहेगा, बहुत अनाप शनाप बातें करेगा, उल्टा सीधा बात करेगा, आपको बड़ा पैसा वो बनने ही नहीं देगा। आप मार्क मिनर्विनी को लोग कॉपी करते हैं, आपको पता है मार्क मिनर्विनी का बुक साइज क्या है? 7.5 करोड़, $1 मिलियन, ठीक है? वो पेनी स्टॉक्स में डील कर सकता है। आप में से बहुत सारे लोगों का पोर्टफोलियो 50 करोड़ 100 करोड़ का भी होगा जो इस ग्रुप में, आप तो उसके जैसा कर भी नहीं पाओगे ट्रेडिंग। तो वो जो ब्रेकआउट खरीदने की बात करता है ना, वो छोटे अकाउंट्स के लिए करता है, बड़े अकाउंट्स तो ब्रेकआउट ट्रेडिंग कर ही नहीं सकते। इंस्टीट्यूशन कोई ब्रेकआउट ट्रेडिंग कर पाएगा? नहीं कर पाएगा ना। उसको तो रेड कैंडल में खरीदना है और ग्रीन कैंडल में बेचना है, क्योंकि रेड कैंडल में सप्लाई ज्यादा होगी और ग्रीन कैंडल में बाइंग ज्यादा होगी। तो जब बायर ज्यादा होंगे तो मुझे बेचना है, जब सेलर कम ज्यादा है तो मुझे खरीदना है। उनका अप्रोच ये होता है, जो छोटे होते हैं जिनको उछल कूद करना है, मंकी ट्रेडिंग करनी है, दे कैन अप्रोच द ब्रेकआउट ट्रेडिंग, बट आई डोंट सी कि उनमें पैसा बनेगा। इसीलिए मार्क मिनर्विनी ने 1 साल से कोई ट्रेडिंग नहीं करी है, बड़ी ट्रेडिंग नहीं करी है पिछले साल, ठीक है? जितने भी ब्रेकआउट ट्रेडर्स हैं वो अपना बोरिया बिस्तर समेट चुके हैं, काफी घर जा चुके हैं, ट्विटर पे भी हल्ला कम हो चुका है। आपने देखा होगा सारे फेक स्क्रीनशॉट्स में, किसी के बारे में नेगेटिव नहीं बोलता, क्योंकि मार्क मिनर्विनी का ये बीसीपी और बच्चे पार्टी लोग करते रहते, मैंने सबको स्टडी किया हुआ है, राइट? और मैं आपको बोलता हूँ सबसे बड़ा वर्ल्ड का ट्रेडर है स्टेनले डकर मिलर और पॉल टूडर जोन्स, और ये दोनों का अप्रोच है बाय इन फियर एंड पैनिक। इनसे बड़ा कोई ट्रेडर नहीं है, ठीक है? उसके बाद जिम सैमन से जो कि क्वांट की ट्रेडिंग साइड में, ठीक है? वॉरेन बफेट का भी रिटर्न 13-14 टके का, वो इन्वेस्टर है लॉन्ग टर्म। सो ये जब दो लोग जिस अप्रोच से बड़ा पैसा बनाया, आप उस अप्रोच को फॉलो करो ना यार, ठीक है? मैं बोल रहा हूँ मेरे क्लाइंट ने, आप ट्विटर पे रोज वो मेरा ट्वीट रीट्वीट करते हैं, इसमें भी होंगे, उन्होंने पिछले साल वो मेरे पास 2020 में आए 15 लाख रुपए लेके, और अभी उनका पोर्टफोलियो 3 करोड़ का है, ठीक है? मैंने ऐसे हेल्प उनको करी और मेरे आज बहुत अच्छे दोस्त हैं बेचारे, बहुत प्रेज भी करते हैं, बहुत फैमिली फ्रेंड है। आप समझो कितना परसेंट रिटर्न हुआ, लेकिन क्या उस सारे क्लाइंटों का वो रिटर्न हो सकता है? नहीं हो सकता। अगले ने रिस्क लिया, उसने बोला कि मेरा पैसा कैपिटल जीरो भी हो जाएगा तो सर मुझे कोई अफसोस नहीं है, इसलिए उसका रिटर्न उतना बड़ा है। किसी ने रिस्क बिल्कुल नहीं लिया तो उसका रिटर्न 15% होगा, किसी ने रिस्क लिया तो उसका रिटर्न 2000% भी हो सकता है। लेकिन आप समझो वो क्या रिटर्न, जो 10 करोड़ रुपए लेके आएगा उसको 200-500% का रिटर्न बन जाएगा? नहीं बनेगा। तो आपको समझना पड़ेगा बड़े कैपिटल पर रिटर्न बनाना बहुत मुश्किल है। आप आनंद को दे दो, नवनीत को दे दो 2 लाख रुपए, वो आपको 10 लाख रुपए करके दे देंगे, लेकिन आप उनको 20 करोड़ दे दो, उसका वो 50 करोड़ नहीं कर पाएंगे। सो बड़े कैपिटल पे पैसा बनाना बहुत मुश्किल काम है। छोटे कैपिटल पे कोई भी मंकी की तरह उछल के 2-4 ट्वीट करके हीरो बन सकता है। बड़े कैपिटल पे पैसा बनाना इतना आसान नहीं है, क्योंकि उस पोजीशन, उतना पैसा डिप्लॉय करने के लिए आपको स्ट्रैटेजी चाहिए। ऑप्शन राइटिंग में भी 5-10 करोड़ से ज्यादा मैं डिप्लॉय नहीं कर पाता हूँ, 20 करोड़ से ज्यादा डिप्लॉय नहीं कर पाता हूँ सर्टेन अकाउंट्स में। तो मुझे इसलिए कुछ इक्विटी इन्फोसिस टाइप के स्टॉक्स लेने पड़ते हैं, मेरी मजबूरी होती है, मैंने चाह के भी ले लेता हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे को पैसा तो डिप्लॉय थोड़ा बहुत करना ही है ना। तो आप समझो बड़े पोर्टफोलियोज पे बड़ा पैसा बनाना इतना आसान नहीं है। उसका एक ही अप्रोच है, बाय फियर एंड पैनिक व्हेनेवर यू गेट इट।
and sell euphoria and greed whenever you get it. छोटे portfolios में you can have different approach, you can still go in and out and do lot of things. बाकी कुछ भी नहीं होगा आप लोगों को, आप लोग बहुत अच्छा करेंगे, हम लोग भी पूरी कोशिश करेंगे कि मदद करें, और डेफिनेटली आप लोग ये वाली जो भी सिचुएशन अभी चल रही है, एक दो तीन महीने में सब सेटल हो जाएगा, उसके बाद शायद हम लोग अच्छा करेंगे। और स्टॉक्स वाइज में जो भी मेरे को लगेगा कि मुझे मदद करनी चाहिए वो मैं डेफिनेटली ट्विटर पे, टेलीग्राम पे करता रहूंगा। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।